सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज कुछ वर्कशीट आपसे डिस्कस करूँगा क्वेश्चन आंसर सेशन की फॉर्म में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे कि बोहर्स के एटम में रेडियस कैसे डिपेंड करता है एन और जेड पे। रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द एटॉमिक नंबर जेड। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड है आपका स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी। थर्ड इज द टाइम पीरियड। फोर्थ इज द फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ is the current. Sixth is the magnetic moment. Seventh is the magnetic field. Eighth is the kinetic energy. Ninth is the potential energy. 10th is the total energy. 11th is the momentum. 12th is the angular momentum. 13th is moment of inertia of the electron. 14th is de Broglie wavelength of electron in nth orbit. So these are certain questions, and after that there is a question on electronic transition. That suppose the electron makes a transition from energy E1 to E2. Then the first question is how to find lambda of the photon in this particular case. Next is let us say which spectrum lies in the UV region. Then is which spectrum lies in the Balmer region, visible region. Then is what spectrum lies in infrared region. So there are certain questions based on Bohrs model. So these are the 18 questions. So you just take your time for 1 minute and try to solve this out. So let's discuss the solutions. So the first thing is radius. So radius here is equal to R naught n square by z. R naught here is 0.529 angstrom. So this is the radius in nth state, and it is proportional to n square, the square of the energy state number. Then we have speed. So speed is v naught into z by n. V naught here is c by 137, which is equal to 2.01 10 to the power 6 meter per second. Then is the time. So time is equals to t naught n cube by z square. T naught here is 1.6 into 10 to the power minus 16 second approximately. Then frequency is inverse of this. So frequency is f naught z square by n cube. And if you solve this, it will be 10 to the power 16 by 1.6 into z square by n cube. So about of the order of 6 into 10 to the power 15 hertz, which is frequency of oscillation of the electron. Next is current. So current is charged by time. So this is E. Time is proportional equal to T naught n cube by z square. So this can be written as E by T naught z square by n cube. Next is magnetic moment. This is equal to I into A, and it is proportional to n. Then is the magnetic field. So magnetic field is proportional to I by R. I is proportional to z square by n cube, and radius is proportional to n square. So this is proportional to z square by n raised to power 5. Next is kinetic energy. This is proportional to z square by n square. Next is potential energy. Same format is there. Z square by n square. Here also z square by n square. So this is how they can be written. Exact values are kinetic energy is equals to 13.6 z square by n square in terms of electron volt. यूनिट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा. पोटेंशियल एनर्जी में इसका डबल होता है. दिस इज -27.2
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ईवी में आएगा, टोटल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, सो दैट विल बी -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई बार इसमें जूल में कन्वर्ट करना होता है तो 1 ev इज 1.6 10⁻⁻19, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा मोमेंटम, सो मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है वी नॉट जेड बाई एन, तो यहाँ से कह सकते हैं मोमेंटम भी 1/n के प्रोपोर्शनल होगा। एंगुलर मोमेंटम होता है एन एच बाई 2 पाई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम भी एन के प्रोपोर्शनल होगा। फिर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता है आपका एम आर स्क्वायर, तो एम इंटू आर होता है आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड होल स्क्वायर। सो आई आपका आ जाएगा एम आर नॉट स्क्वायर एन रेज टू पावर 4 बाई जेड स्क्वायर, एन की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो लेमडा होता है आपका एच बाई एम वी, तो यहाँ से आपने देखा था वी था जेड बाई एन इंटू वी नॉट, तो लेमडा प्रोपोर्शनल टू एन बाई जेड आ जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, लेमडा निकालना, तो यहाँ से आ जाएगा डिफरेंस ऑफ एनर्जी E1 माइनस E2 इज एनर्जी ऑफ फोटोन, जो कि होता है एच सी बाई लेमडा, तो लेमडा यहाँ से आपका एच सी बाई E1 माइनस E2 आ जाएगा। फिर बात है हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसमें यूवी रीजन, तो लाइमन जो है वो यूवी रीजन में होता है, बाल्मर जो है वो विजिबल में होता है, और बाकी सारे पास्चन ब्रैकेट ट्रिपन ये इंफ्रारेड रीजन में आ जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। और एक चीज़ इसमें हो रहा है कि जितना एनर्जी कम होगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटीज उन स्पेक्ट्रल लाइंस की होगी, जो कि एक पॉइंट भी था बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था उसका एक सर्टेन लिमिटेशंस भी था। So you have seen that we have discussed a number of questions, different manipulation based questions based on Bohr's atom. So the purpose behind developing these worksheets is to make sure that when when you study the topic, just cross verify yourself that how many questions you are capable to do, how many information, how many patterns you are able to retain when asking the questions. Because thing is, it doesn't matter you study how many pages, you study from what teacher, you study from what book. Ultimately, you will be judged on the basis of your capability to retain. So do remember, retention is the key to success in cracking the NEET. So if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.